Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. तो समस्त को आज क्लास रे स्वागत जो थे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो आमे एसएसबी टीजीटी पई बहुत दिन रु आमे क्लास को जमती कहला बलिया रखी देइथिले क्लास स्टार्ट करनथिले क्लास को कंटिन्यू करनथिले तो आज ठारू हमर सप्ताह रे मध्ये किछि दिन एसएसबी टीजीटी रहबा आमे प्रैक्टिस मध्ये करबा तो आज किछि पीआईक्यू सेशन नु हमर प्रैक्टिस स्टार्ट करबा मानसी गुड आफ्टरनून चेष्टा करिबा हमर सब फैक्ट हमर सब प्रिंसिपल को हमें आउथरे रिकॉल करिबा हमर प्रथम क्वेश्चन आज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू द लर्नर ना मेकिंग लर्नर नो द बेसिक स्किल्स ना चेंज लर्नर्स बिहेवियर ना एनेबल द लर्नर टू रीड एंड राइट समस्त टिके सेशन को शेयर कर दिया अरे बाप रे सी ओके समस्त ट्राई कर आंसर देवा पाई आउ सेशन को टिके शेयर कर दिया पिला माने तो सी कहिला कि हमर टीचिंग रो मेन पर्पस कोन रहउजे टीचिंग रो मेन पर्पस कोन ना हमें तार ऑप्शन ए देला इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू द लर्नर केवल जे इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करबा ताहा नुहे सेटा केबे भी टीचिंग रो एम नुहा तापरे सेकंड वन देला मेकिंग लर्नर नो बेसिक स्किल्स लर्नर मानो को बेसिक स्किल जानिबा पर हेल्पफुल करे ना चेंज लर्नर्स बिहेवियर ना एलाबल द लर्नर टू रीड एंड राइट टीचिंग केवल कौन छुआ मानन को रीड एंड राइट पई हेल्पफुल हुए ना छुआ मानन को ये बेसिक स्किल सिखाय तई तमे माने समस्त को चेंज इन बिहेवियर जोटा कि हमर कोन अछि ना लर्निंग रा डेफिनेशन लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ठीक तो गुड आफ्टरनून अरे एसएसबी टीजीटी बोली संख्याटा एते कम की माने तमे क्लास अनुसार संख्याटा आछो ओके वेरी गुड तो राइट आंसर होचे समस्तंकर कि इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू द लर्नर टीचिंग हो कि लर्निंग हो तार माने नो कि केवल हमें इंफॉर्मेशन दवा मेकिंग लर्नर नो बेसिक स्किल्स केवल ताको बेसिक स्किल्स सिखेबा ताहा तो नुह तापरे कोन एनेबल द लर्नर टू रीड एंड राइट केवल रीड एंड राइट कर देले जदी हमर लर्निंग प्रोसेस बा टीचिंग प्रोसेस कोन ना फ्रूटफुल हे जानता ताहाले से कथा नुह तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी चेंज लर्नर्स बिहेवियर जोटा कि हमर लर्निंग रा डेफिनेशन ने मध्ये अछि जोटा कि तुमरो फर्स्ट यूनिट रे अछि लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम तो सेही थ्रू ही कांसेप्ट आसीची आउ थरे मध्ये क्वेश्चन आस्तला केमती जेमती लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर परमानेंट टेम्पोररी ये तमरा प्रीवियस ईयर एसएसबी टीजीटी रो फर्स्ट क्वेश्चन ने आस्थला आर्ट सेक्शन ना तो राइट आंसर होची चेंज लर्नर्स बिहेवियर ओके गुड आफ्टरनून नेक्स्ट आसला सेकंड नंबर क्वेश्चन द एक्चुअल जॉब ऑफ ए टीचर इन द क्लासरूम इज टू एंश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन ना एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द क्लास ना क्रिएट कंडीशन फॉर लर्निंग ना मॉनिटर लर्नर्स बिहेवियर प्रणाम सस्मिता ओके तो राइट आंसर होची कोन ना क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग देन 3 नंबर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिफाइन टीचिंग एज क्लाइंट काउंसलिंग ना कार्ल रोगर्स ना जीन पियाजेट ना जॉन ड्यूई ना जेम्स बुनर अरे भाई जाओ 50 छुआ आसिले क्लास को दैट्स माय गुडनेस
50 छुआ भी नहांती 50 स्क्रीन ने देखौची मोबाइल ले देखला बेलको आ गोटे देखौची 3 नंबर ए वेरी गुड क्लाइंट सेंटर्ड जोटा हमें कहले काउंसलिंग कार लोगोस ठीक अछि कार लोगोस काहे के हबो सब्जेक्ट तुम्हारा पीसीएम रे मैथ इंग्लिश सब्जेक्ट कौन मैथ सहित तुमर फिजिक्स थिबा केमिस्ट्री थिबा जदी तुमर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिसाब रे तुमे भाबो तुम बीएड सब्जेक्ट हिसाब रे नुह कल्पना ए ताले क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग माने कौन तो कार्ल रोगर्स कौन कहिथिले ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थ्योरी विषय कहिथिले ह्यूमनिस्टिक कहले हमें जाउछे कार्ल रोगर्स से आउ कौन कहिथिले ना जोडा पर्सन सेंटर्ड बा कौन तमरा क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग आउ कौन कहिथिले ना फुल फंक्शनिंग पर्सन जदि आसीबो फुल फंक्शनिंग पर्सन ए स्टेटमेंट किए दैछंदी ना फुल फंक्शनिंग पर्सन कथा किए दैछंदी ना हमरो कार्ल रोगर्स फुल फंक्शनिंग पर्सन कथा दैछंदी तापरे असला कार्ल रोगर्स आउ कोन कहिछंदी ना सेल्फ कहिछंदी द सेल्फ रे आसीबो कोन सेल्फ वर्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ए जिंस ऊपर से कौन करूथिले ना बिलीव करूथिले ता थरे आउ कोन करूथिले ना तांकर आउ गोटे बेटर कांसेप्ट अछि कंडीशन वर्सेस अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड्स ए गुडाक तुमरो रिपीटेडली जो जहां भी आरएसटी हो तुमरो एबे एसएसबी टीजीटी हो तुमरो एलटीआर एग्जाम हो ए क्वेश्चंस गुडाक तुमरो रिपीटेडली आसुची कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किए देथिले तुमरो कंडीशन वर्सेस अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड कथा किए देथिले फुल फंक्शनिंग पर्सन कथा किए कहिथिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा थ्योरी रे हमें बिलीव करू ता सहित आउ गोटे जोटा तांकर द फेमस स्टेटमेंट कोन ना कांग्रुएंस वर्सेस इनकांग्रुएंस ओके यस राजत कुमार कहलेनी कांग्रुएंस एंड इनकांग्रुएंस जोटा कुहा जायथिला एम्पैथी कांग्रुएंस ओके सस्मिता तो कौन ना आमे कहले कि विश्वास करिया गले एठी जो दीटा कंडीशन आ अनकंडीशन रिगार्ड रहिला तो कहा ऊपर बिलीव करंदी ना अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड बेले बेले तुमको क्वेश्चन आसे कि अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स आमे छुआ मानन को भलिया एनवायरनमेंट दबा दरकार ना आमे छुआ मानन को ऊपर कोनोसी रोकठोक लगेबा नाही तांको गोटे फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट दबा सो दैट तांकर बेटर डेवलपमेंट एनहांसमेंट हेई पारिबो ओके तापर देखो कांग्रुएंस और इनकांग्रुएंस भितरे कौन कांग्रुएंस और इनकांग्रुएंस जोटा रहिला हमर गोटे रहुची कौन ना आइडियल सेल्फ आउ गोटे कौन ना रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ आउ रियल सेल्फ जत्ते बेले हमें रियल ले जहा मु मो आइडियलिस्टिक व्यू सेया भाबुची मु जदी एबे हार्ड वर्क करूची एवं डेडिकेशन करूची मो के प्रस्ताव आनी कि रे पचारे मैम सॉरी बट हाउ ओल्ड आर यू बाबा कि तुम क्लासमेट तुम टीचर मे भी तुम सीनियर तुम टीचर एते भी मैम बुढ़ी है मे भी तुम जूनियर स्टिल योर टीचर किछि भी जदि तुम गेस करबा ताले मोर एज टा सेही भीतर ही आसुची त तुम जो भितर जाउथबो मु सही भितर को गोटे कैटेगरी रे आस्तबी मे भी क्लासमेट मे भी सीनियर मे भी जूनियर तो ठीक अछि कोन हैला ना जो हमरा आसिला आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ फॉर सपोज मो रियल सेल्फ हैला मु डेडिकेशन करू नाही मु हार्ड वर्क करू नाही किंतु आइडियल सेल्फ मु कोन भाबुची जते बेले मु दिल्ली कलिंग स्टेडियम पटे आसुची सेते बेले कोन होउची ना मु भाभी कि आसुची कौन मते गोटे चाकरी मिल जिवो अरे एठी कौन कले ना एठी माने जो साड़ी पिंदी के बुली लेनी ये माँ एठी कौन सी ओरिएंटेशन एमती देची मु रील्स टा किंतु सेव करके रखुजी भाई मते रील्स रे कौन करियार अछि मु भी आसीबे एथर एसएसबी टीजीटी आसले रील्स करबी भाई रील्स करिया कहले मो रियल सेल्फ रे मते से डेडिकेशन मते सेति की करेज मते सेति की जिंस दरकार किंतु ना मो रियल सेंस रे सेति
परिश्रम करनी मु खाली डेली भाबुची हां अछि तो पढी तो मैम नोटिफिकेशन केबे आसीबा नोटिफिकेशन तो आसुनी केस तो लागी के अछि खाली वैकेंसी ऊपर वैकेंसी नोटिस ऊपर नोटिस वैकेंसी 0 ओके तो से तापरे वाईटी ब्लॉग यस तो से जिनसटा आमे भाबी कोन करूचे डिले करि दोचे कोन ना हमर पढिबाटा तो एटा को हम कहूचे इनकंग्रुएंस हम रियल सेल्फ कोटे अब हम आइडियल सेल्फ कोटे किछिटा मैच करूची तो जोठी कि बहुत फ्यू मैच करूची किंतु जोठी मु सतरे डेली गडी तडी के सेति के परिश्रम करची आमा भितर किछि जना सीरियस भी थिबे मु मोर सेति के डेडिकेशन दउती हम सपना भी देखिछि मते भी दिने से कलिंग स्टेडियम जिबार अछि जोटा कि मु कहि परबी कंग्रुएंस तुम मान को पाठ को नेकी तुम मान को एग्जांपल ओके प्रणाम गुड आफ्टरनून कुआडे से मो एज पचार देकी पळेला से कुआडे मो एज पचार देकी पळेला से आस्ती पचारथिला तो तापरे आ गोटे जिनस एठी आ गोटे जिनस एज रे मु कहि दिए मैं भी मु हसी देली सेते बेले से खराब भाबी थिबे बट गोटे जिनस मु शेयर करिया को चाहे एज डज नॉट मैटर तम माने मते देखि कि भी जानि पड़थुवा मु एते बुढी नुहा किंबा एमती भी अछि जने जने बहुत यंग देखांदी बहुत एजेड थांदी मैटर करे कार एक्सपीरियंस केते आउ जदी जने ए जगह को आछि त माने कोन ओटे रीजन ता बखरे एक्स्ट्रा हम ठारू किछि थिबो से आथिबो एमते किछि मैडम महान पंडित नुहंती कि किछि नाही मैं भी एजुकेशन फील्ड रे मु सेति के पढाई पारुछि किंबा एक्सपीरियंस आसी जाईछि एमती हे पारे मु जेमति कि मोर एते सारा पीजी डिग्री क्लियर करके आछि तम माने किंतु तम ग्रेजुएशन थारू तमे कांस्टेंटली तमर एग्जाम पई प्रिपेयर होथो सो दैट आज मु एठी तम माने मो क्लासमेट हे के सामने रे बसिथिबो तुमे माने मो सीनियर हे के भी सामने रे बसिथिबो केही मो जूनियर भी हेइथिबे ओके किए कहला स्वयंजित 30 ए भाई आ 40 तो नहीं जाई थांदो 30 कोन फाइनल ठीक अछि लेट इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा तापरे आसिला कोन ना द असेसमेंट फॉर लर्निंग इज टिपिकली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स at the end of the course during the teaching learning process any time of the program आज सब गुडा को बोधे हमर आंसर सी हेबार अछि गुडली कहलेनी 25 26 27 तो माने जो गेस करछ से भितरिया ही अछि ओके ठीक अछि भाषा ए सरे ताबरे इस कहबी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन ना हमर असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें कहले सेटा को हमें कहूचे फॉर्मेटिव असेसमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमर केबे हेते ना हमें जानि छे हमर फॉर्मेटिव अछि समेटिव अछि डायग्नोस्टिक अछि और प्लेसमेंट असेसमेंट बा इवैल्यूएशन अछि तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होची ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो थे कि कोन स्टूडेंट मानन को हमें कोन करि थाउ फीडबैक दे थाउ नॉट ओनली हमें स्टूडेंट मानन को फीडबैक दे थाउ हमें मध्ये फीडबैक समान थारु रिसीव करि थाउ जहा द्वारा कोन हुए ना हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रा इंप्रूवमेंट हेई पारि थाए एवं हमर कोन ना हमें बेटर लर्निंग आउटकम्स आउट करि पारि थाउ ओके तो से जो जिनसटा को रहिला हमें आकु कहूचे कोन ना असेसमेंट फॉर लर्निंग देन हमर असेसमेंट एज लर्निंग अछि तो असेसमेंट एज लर्निंग को हमें कोन कहूचे ना हमर रहिला असेसमेंट एज लर्निंग तो एज लर्निंग को हमें कहूचे सेल्फ असेसमेंट आ या भीतर कोन जाउचे ना हमर पीयर असेसमेंट मध्ये जाउची सेल्फ असेसमेंट रे हमें कोन करूचे ना हमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माध्यम रे हम निजर माइंड्स एवं थिंकिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करके हमें सब जिनसा एनालिसिस करिया पई लागुचे तापरे कोन होचे पीयर असेसमेंट रे हमें हम पीयर एक्टिविटीज गुडा करूचे असेस करूचे जोथरे कि हमर कोन क्वेश्चनिंग स्किल क्रिटिसाइजिंग स्किल एनालिसिस स्किल ए सब जिनसा गुडा का हमर डेवलप हे जाउची तापरे कोन आसिला ना at the beginning of the course हमें कहि परिबा हमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूचे कोन ना डायग्नोस्टिक करूचे नो अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस और स्ट्रेंथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट कोन ना हमें वीकनेस एवं स्ट्रेंथ जत्ते बेले हमें एज ए टीचर है कि विद्यालय को जाउचे कोनोसी क्लास को एंट्री मारुचे कोनोसी सब्जेक्ट हमको असाइन हेछि कि मते सोशल साइंस पढेबार अछि कि मते मैथ पढेबार अछि कि मते साइंस पढेबार अछि सही समय मु कोन करूची ना मु
सेही समय डायग्नोस्टिक करूचे पिला माननको डायग्नोसिस करिया को चाहूचे कि पिला मानकर वर्तमान करेंट नॉलेज ता केते अछि से माने एबे केति के स्टेट जानि छथि मु जानिले तो पढेबी नहले मु भाबिबी मो महान पंडित मु पढेई जाइथिबी तो जेतेबेले भी मु कहूची मु एठी तो तुम माननको एमती पढाए जहा मते फील हुए मु से जिनसटा पढाए किंतु जेतेबेले मु पेड क्लास नुए जो माने पेड क्लास करथिले जानिथिबे सब क्लास रे मु फर्स्ट पीपीटी देखे सला पर पिला माननको टाइम दे पढिबा पई बेले बेले मो पढा स्ट्रक्चर टा का भल लागो नथबो बट मु सब क्लास रे दिए तुमे आगे पढ तापरे मते कोटा बुझी होउनी तापर मु बुझेबी मु तो सब तो केंद्र बुझेबी किंतु कोटा बुझी होउनी जानले काहे ना देखो सीसी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट तमरा मने रहि जाइथो किंतु सीसी भीतर पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर कंटेंट कोटा बुझी होउनी मु जते बार बार कहउतबी सीसी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एटा होची निरंतर मूल्यांकन ताहाले किछि लाभ नहीं हमको जानियार अछि एक्चुअली पिलांगर वीक एरिया को जगह रे अछि पर्टिकुलर एते सारा कांसेप्ट भीतर से कोटा बुझी परु नाहंती ओके तो वीकनेस स्ट्रेंथ जानले या पर हमर आसिला कोन एट द एंड ऑफ द कोर्स हमें कोटा करबा ना एट द एंड ऑफ द कोर्स हमर हबो ना समेटिव असेसमेंट जोटा को हमें कहूचे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोन ना असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये कौन करी थे ना वैल्यू जजमेंट जहां भी इवैल्यूएशन एटा सहीया वैल्यू जजमेंट सर्टिफिकेशन आउ ए समेटिव असेसमेंट द्वारा हमको कौन जाना पड़ी थाए इज आवर लर्निंग अचीवमेंट हमर जोटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहला अचीव्ड और नॉट हमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव करी छे से जिनसडा हमें रियल सेंस रे अचीव करी पारि छे किबा अचीव करी पारि नाही ओके Yes, find a particular problem. Diagnostic Madhusmita, very good. Next, now which of the following methods of teaching does not follow constructivist theory? Problem solving method, cooperative method, project method, lecture method. भाबो तुम्हारा SSB एग्जाम में मध्य एई भली लेवल लो क्वेश्चन आसुची बास खाली टिके कांसेप्ट जानिथिले जो कोनते धाड़ी देखिले माडी जेवा कथा हमें तो धाड़ी देखि जानछु हमें तो देखु देखु कहि दबो तुमे माने एते प्रैक्टिस करलानी बेले बेले मु निजो को ठक भावे वेरी गुड ऑप्शन डी लेक्चर मेथड Next asila kaana na a series of situation placed before learners for eliciting specific type of behavior is known as examination, report card, a test, a portfolio. Yes, traditional method, lecture method. PCC 6 नंबर डी क्या कहले रे पोर्टफोलियो मधुस्मिता कहलेनी पोर्टफोलियो अरे एटा ये टेस्ट हबो ऑप्शन सी a series of situation placed before learners for eliciting specific type of behavior सेटा को कहा जाए a test a set of question a series of situation learners रो behavior कोन से specific behavior जानिबा को टेस्ट पोर्टफोलियो कोन तमे कोन से सीरीज ऑफ सिचुएशन क्रिएट करिमनी पोर्टफोलियो हला छुआंगर जोटा की होल ईयर होल सेशन जो गुडा का बेस्ट वर्क सेही गुडा को पोर्टफोलियो माध्यम रे तुमे कलेक्ट करके आज टीचर रखिबो किबा स्टूडेंट निजे ही तारा जोटा बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट वर्क सेही जिंस गुडा का कोन करे ना सीए सेही गुडा का रखे एग्जामिनेशन तो हला हमर फाइनल एग्जाम हम जोटा करूचे रिपोर्ट कार्ड हमर एनुअल एग्जाम रो रिजल्ट पई ही दिया जाई थाए रिपोर्ट कार्ड हम एग्जामिनेशन हे सला हमर केते परफॉर्मेंस हेची हे अनुसार ने हमें देले ओके ए सीरीज ऑफ सिचुएशन प्लेस्ड बिफोर लर्नर्स पाखरे दिया जाए फॉर एलिसिटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर आसीबा को ताको कोन कुहा जाए ना ताको कुहा जाए ए टेस्ट किमा तुमको क्वेश्चन भी आसी पारे ए सेट ऑफ क्वेश्चंस ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस तो सेही जगह कोन हबो ना तुमको ए टेस्ट ही हबो
पोर्टफोलियो होला कौन ना स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क ड्यूरिंग माने गोटे लॉन्ग सेशन धर की होल द सेशन छोरा बेस्ट वर्क जोटा रहउची कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओके आउ रिपोर्ट कार्ड होला एनुअल एग्जाम पर स्टूडेंट मानकर प्रोग्रेस कार्ड जोटा हमें पेरेंट्स माने को प्रोवाइड करू छे एग्जामिनेशन सेथे हमर सब प्रकार एग्जामिनेशन सिस्टम जीवो then as the child grows up there is visible increases in height and weight this process is called development growth maturation and transformation child जेतेबेले ग्रोज अप होउची तार किछि विजिबल इंक्रीजमेंट हाइट एवं वेट रे देखा होउची जेंति कि मु बड़ हे गले अब मु एबे पुतना भले देखा होउची तो एडा कोन कहया यस very good growth yes growth is quantitative and visible clearly हमको visible देखा जाए एवं कौन डेवलपमेंट माने जोटा हमें कौन करि परिबा केवल प्रेडिक्टेबल हमें देखि परिबा नहीं समन्वित हसिलेनी आ कौन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ मैचुरेशन टा को हमें केवल बुझी परिबा पिलार एतिकी परिपक्वता हेई परिछि बोली आ ट्रांसफॉर्मेशन टा को मध्य हमें अनुभव करि परिबा किंतु ट्रांसफॉर्मेशन मध्य विजिबल हबा नाही तो राइट आंसर होछि ग्रोथ ओके नेक्स्ट आसिला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रुब्रिक पोर्टफोलियो कांसेप्ट मैप वेरी गुड मु एक्चुअली कहूची नेक्स्ट क्लास में जब एसएसबी टीजीटी क्लास करबी मु कहबी तुम मानका पाई पिले मु रसगुल्ला गुलाब जामुन चक्की सबू नहीं के आसबी क्लास को आस और क्लास कर ए जो हमें प्रैक्टिस टीचिंग करी गले हो तमे माने जदी मोर आंसर देई देलो तमे जदी क्लास रे चुप बसिलो तम मानकु मु पेन देबी तम मानकु मु चॉकलेट देबी एमती कह जाए ना आमे जदले प्रैक्टिस टीचिंग को जाउतलु हमर काले मार्क कटै देबे बोली मु समस्त कुए ए पार्टी करनी लास्ट को तुम गोटे एग्जाम करवा चॉकलेट एत किए कौन की दब तुम गोटे एग्जाम करवा भल से पढ़ुता जदि एग्जाम रे भल मार्क रखिब तुम पाखे जहाँ नथिबो मु सेया देबी मु देइथिली भी जण को गोटे वर्ड बुक देइथिली मझिरे बहुत भल पढ़ुथला ताको बड़ जो इंग्लिश रो डिक्शनरी सेया प्रोवाइड करिथिली जण को खाता जे जहाँ मागिथिले जहाँ देइथिली 6-7 जण को देइथिली तो सही बढ़िया हो कौन तुम मान को लास्ट को मुझे कहीकि आनी चक्की देवी बिस्कुट देवी पार्सल करदेवी इंस्टामार्ट और स्विगी रे ओटीटी पाई मध्य क्लास होउची अच्छा हो मैम समन्विता कलिनी यस वेरी गुड ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सब करेक्ट आंसर कि रुब्रिक जोटा पिला मानकर परफॉर्मेंस जानिया पई से पछरिला यूज एन असेसमेंट टूल इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस रुब्रिक ता असेसमेंट टूल हिसाब रे हमें कोन करिथाउ डायबिटिक है जो हम रसगोल्ला दियो एटा मिठा खाइबा भलो न अच्छा ठीक अछि रसगुल्ला रे ताले आ सत्य सुंदर नाही डायबिटिक हवा भाई चॉकलेट रे डायबिटीज हे जवा भाई त कोन पोर्टफोलियो ही मामे कोन करछे गोटे टूल हिसाब रे नोचे पिला मान को परफॉर्मेंस को रखुचे असेसमेंट टूल कांसेप्ट मैप मध्ये हमें कोन करूचे छुआ मान को असेस करिया पई टाइम किछु वर्क दे के हमें करि पारुचे एवं कोन किंतु स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गोटे एग्जामिनेशन सिस्टम जोटा को हमें टूल हिसाब रे यूज करू न थाउ ओके तो सेथि लागि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिफर करबो देबी मो बाहागर को भोजी खाइया को तमरे को डाकिबी एकाथर के मागेना रे काम खत्म गिफ्ट ने के आसो मोर लाभ हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज least important while addressing individual differences in the classroom need based learning opportunity presenting diversified learning tasks improved ventilation and right tide ability based grouping of learners कोटा हबो very good okay
तुम मैंने चाकरी कर सारा पर से पचारे केबे मैरिज अछि अरे तुम मैंने चाकरी करना था आ की गिफ्ट आनी मैडम के पई चाकरी करी सारा जल्दी जल्दी चाकरी करो नीड बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी यस आमे जानी छे आमे नीड बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी दबा दरकार छुआ मानकु सो दैट कोन ना छुआ मानकु जो नीड्स इंटरेस्ट अछि सेही वे तांकर डेवलपमेंट हेई परिबो डाइवर्सिफाइड लर्निंग टास्क काहेंगे आमे जानी छे समस्तंकर लर्निंग पेस अलग अलग थाए निहाती भाबरे लर्निंग टास्क ता डाइवर्सिफाइड डिफर करे एवं हमको दबा दरकार ओके अच्छा अच्छा इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड ब्राइट लाइट आमे जानी छे कि पिला मानक पई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ब्राइट लाइट एवं कोन ना वेंटिलेशन आवश्यकता अछि तापर असला एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ लर्नर से पचेरि छि कोटा होछि कोन ना लीस्ट इंपोर्टेंट व्हाइल एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो इंडिविजुअल डिफरेंस में एबिलिटी ग्रुपिंग ता लीस्ट इंपोर्टेंट रहइबो नीड बेस्ड जो माने सीडब्ल्यूएसएन से माने हम थारु किछि डिफरेंट नीड्स करछंती डाइवर्सिफाइड लर्निंग कहा को ना लर्निंग डिफरेंसेस पई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पई दोछे ओके नेक्स्ट वाला कौन है ना कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन दैट गोज ऑन ड्यूरिंग द एंटायर एकेडमिक सेशन इज मेनली बेस्ड ऑन समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव नॉन रेफरेंस्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड तमरा एसएसबी टीजीटी बाहर एसएसबी टीजीटी बाहर की चाकरी कर खुशी खबर गुड़ा दिए तापर बाहा इनविटेशन पठेले गिफ्ट धरिके आसीबो एते व्यस्त कम में वेरी गुड बहुत बढ़िया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अंडर हमर जाउछ कोन ना कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन अच्छा पिले एटा समस्तंगर कंफ्यूजन टिके आंसर दियो तो नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कहले कोन बुझो What is the difference between norm-referenced and criterion-referenced evaluation system? कौन difference रही छी? Rank norm, okay. जल्दी 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 आंसर दिया नेक्स्ट बार अरे माने तमे एनआरटी आ जो कौन देलो सीआरटी भाबिली एनआरटी आ सीआरटी कौन करे यस यस समस्त राइट अछि कोन ना हमर क्राइटेरियन रेफरेंस आमे किछ गोटे स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड क्राइटेरिया हमर फिक्स है आ ताकू नै कि कोन आमे एग्जामिनेशन करिथौ एवं सेही क्राइटेरिया हिसाब रे आमे देखो कार परसेंटेज केते पास और फेल दैट्स इट बट इन ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आमे गोटे कंपैरिजन करिथौ परफॉर्मेंस बिटवीन स्टूडेंट जेमति कि आमे रैंकिंग करिथौ किछ गोटे माने परसेंटाइल सिस्टम है थाए जोथरे कि हमर कोन थाए कंपैरिजन हो थाए स्टूडेंट्स मानकर परफॉर्मेंस को नै कि बट क्राइटेरियन रेफरेंस रे हमर कोनसी रैंकिंग सिस्टम ना थाए ओके नेक्स्ट आसले कोन ना पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वेयर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग थ्योरी गिवन बाय जेबी वाटसन जेएस ब्रुनर आरएम गर्च ना कार्ल रोगर्स के पछले सी पूरा मो एज रे लागि जाई छी आई थिंक यू आर 22-23 ईयर ओल्ड मैम यस नियाती भाबरे हबो गोटे कॉमन सेंस ओके गोटे मनीष ग्रेजुएशन केबे सारे ग्रेजुएशन सारे बेले को 21 वर्ष होइथिबो मु खाली बीएड पढी देई के एसएसबी टीजीटी पई पढाउची गोटे जिंस कि यस ऑप्शन डी गोटे लोक खाली बीएड पढी देई के से हाई स्कूल टीचर पई पढाइबो मु जदी खाली बीएड पढी थांदी तम माने भी तो सहीया मु भी तो सहीया मु तमठारो अधिक कोन हेली जे मु गोटे रिनाउंड प्लेटफॉर्म को आसी कि एठी पिला मानन पई टीचिंग एग्जाम पई पढाइबी जदी मु 22-23 वर्ष रे हेथिबी मते 22-23 वर्ष रे एठी किए दब तम मानन पढाइबी माने मु निजे टीजीटी पई पढुची आ मु टीजीटी पई तमको पढौची मु निजे जाउथबी कोठो गोटे बसी की पढुथबी आ तमको आस्थिबे पढौथबी
एटलिस्ट तो ग्रेजुएशन टा सरिया पई 21 वर्ष लागे तापर पुणी मु बीएड करिछि बीएड करिया को जने मनुष्य को 2-3 वर्ष लागे 2 वर्ष लागिला 2.5 वर्ष सेइथिरे पळेला मु पुणी एमएड करिछि मु पुणी पीजी करिछि किंतु मु होछि 23 वर्षरा ओके ठीक अछि कार्ल रॉकर्स कहिसेंगे कि पर्सनल ग्रोथ एवं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वेयर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ओके नेक्स्ट क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ये सामान्यता पर्सन सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉकर्स ऑलरेडी हम डिस्कशन करि सारिछे नेक्स्ट आसला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एक्सप्लोरेशन इंटरैक्शन एक्सपोजिशन कोलैबोरेशन तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग रो को गोटा को जाउनी ओके लेट इट मोर जहाँ भी एज होता तुम्हें माने मोर बंधु तुम्हें माने मोर स्टूडेंट तुम्हें माने मो छुआ माने समस्ते तो टीचर एज केते मैटर करेनी टीचर ठार आमे किछि जानि पारुछे हमर किछि हेल्पफुल करछि दैट्स मैटर आमे अब एज रे डिस्कशन करबानी कि मु तुमको एते एक्सप्लेनेशन देबिनी कि तुम्हें माने भी डिस्कशन करेनी भाबनी जी हमको पढ़ाउछन्ते से हम टीचर आमे जेमते एमके रे पढिछे बस भाबो मोर नॉलेजेबल अदर्स आम ठारू ए आगरे ठिया हेतिबा लोकटी नॉलेजेबल अछि आ हमें पढुछे दैट्स इट यस ऑप्शन सी कोन ना एक्सपोजिशन ओके तो एक्सप्लोरेशन अछि हमें निहाती हमें कोन कहूछे ना हमर प्रायर एक्सपीरियंस को मिसै के हमें कोन करूछे ना एक्सप्लोर करूछे इंटरैक्शन सोशल एनवायरनमेंट सहित इंटरैक्शन करूछे तापर कोन ना कोलैबोरेशन कोलैबोरेटिव लर्निंग कथा अछि किंतु एक्सपोजिशन नहीं Which of the following depends entirely on biological factors growth maturation socialization and culturation कोटा totally biological factors सहित interrelated वेरी गुड जहाँ भी देखा जाए तुम्हें मते सांग भाविले मु रेडी सांग होबा पाई तुम्हें मते जूनियर भाविले मु रेडी जूनियर होबा पाई तुम्हें मते सीनियर भाविले मु रेडी सीनियर होबा पाई बड़ भौणी भाविले बड़ भौणी सान भौणी भाविले सान भौणी बस पाठ पढ़ बिंदास रे डिस्कशन करिया पढ़िबा मु जीए भी हुए वेरी गुड बी मैच्योरेशन ना मैच्योरेशन टोटली डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर नेक्स्ट बा कोन ना a student compares his test scores with his own score which he obtained 1 year ago. It is an example of peer assessment, self-assessment, internal assessment, na formative assessment. Okay. वेरी गुड राइट आंसर अछि सेल्फ असेसमेंट कोन ना मु निजे असेस करूछि मोर प्रीवियस परफॉर्मेंस थिला ताको मु एनालिसिस करिके मोर वर्तमान परफॉर्मेंस सहित कंपेयर्स करिके मु एनालिसिस करूछि नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन द अदर्स ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी वैलिडिटी कोटा सबुठारो निहाते गुरुत्वपूर्ण अटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन ऑल ऑफ द अदर्स Very good. Rajat. Yes. से समन्विता पूरा निया जाली दउछंती पूरा व्हाइट रे धुआं कर दउछंती निया जाली यस अच्छा वैलिडिटी ओके मु भी कहूची वैलिडिटी बट व्हाई वैलिडिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट than others काहे के ऑब्जेक्टिविटी नुहे काहे के रिलायबिलिटी नुहे काहे के यूजेबिलिटी नुहे रीजन कोन व्हाई वैलिडिटी इज इंपोर्टेंट काहे के वैलिडिटी सबठारो इंपोर्टेंट वैलिडिटी ठीक अछि बट वैलिडिटी काहे के इंपोर्टेंट आंसर दिया समझते वैलिडिटी काहे के इंपोर्टेंट देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
वैलिड ऑलवेज रिलायबल। अच्छा टेस्ट वैलिड थिले ही टेस्ट कंट्रोल करी हबो। मैम फेयर सेशन सो ओके ओके आउ गोटे आंसर तुम समस्त ठारू मैं आशा करूथली बट मते से आंसर मिललानी जेमते कि जान एटा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हेथिले तम मानकर गोटे रंग हेइथांता कोन मु काटी देइथानी जेमते टीचर माने भाबननी आमे हमर जतले मास्टर्स करूथलु एमए हम टीचर माने आमे जेते ठीक आंसर दो से अनै थिबे से तांको मुंडरे जोटा चली गोटे गोटे टीचर थिबे प्रोफेसर तांको मुंडरे चली सही वर्डटा माने तमे सही वर्डटा ही कहले ठीक सही बोले नहीं नहीं बस बस तमन तो कहीं मुंड खर्च करूना हो तमन तो कहीं पाठ पढ़ुना हो सही भलिया वैलिड टेस्ट अंडर रिलायबल यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी तो सही भाव में गोटे जिनस मु कहया गली मु आशा करथले एटा सुनिया को चाहे कि रिलायबिलिटी नथिले भी किसी प्रॉब्लम नहीं तमे गोटे एग्जाम करि परिबो बट वैलिडिटी कोन ना व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर आमे जहा इंटेंड करूचे सेही जिनसटा मेजर हेजे कि नहीं तमे जदी हिस्ट्री एग्जाम अछि तुमको निहाती वैलिडिटी हबा दरकार तमे हिस्ट्री क्वेश्चन आनी थिबा दरकार तमे हिस्ट्री क्वेश्चन आनी कि ज्योग्राफी क्वेश्चन आनुछ ताले तमरो रिलायबिलिटी गला चुली को तमरो ऑब्जेक्टिविटी गला चुली को तमरो यूजेबिलिटी भी गला चुली को तो कोन आमे जहा आशा करूछि सबु जिंस सबु टेस्ट वैलिड हेथिबा दरकार जदि मु एबे जाउछि इंग्लिश टेस्ट करिया पई ताले इंग्लिश क्वेश्चन थिबा दरकार मु मैथ करिया को जाउछि मैथ थिबा दरकार तो सेही वाली हिसाब रे विदाउट वैलिडिटी आ सबु जिंस ही अरे वैलिडिटी जतबा हेई पारिबो मु आगो तो इंग्लिश टेस्ट ता करले तापरे देखिबी कि पिला मानकर रिजल्ट रे कंसिस्टेंसी आसुछि कि नहीं मु तो आगो टेस्ट मेक करि सारी कि तार इंटेंडेड आउटकम जोटा ऑब्जेक्टिव सेही जिंसटा फ्रेम करि सारे ता पर मु रिलायबिलिटी देखिबी मु आगो सेही जिंसटा क्वेश्चन ता प्रिपेयर करि सारे तापर क्वेश्चन नो ऑब्जेक्टिविटी देखिबा तापर ही मु देखिबी क्वेश्चन ता करि सरले कि एटा यूजेबल हेई परबो कि नाही समस्तंग क्षेत्र रे ओके नेक्स्ट मैम now which of the following is not true for summative assessment conducted at the end of the course yes feedback provided to students and teachers result in award of grades focus is on final product the right answer कौन है हमारा ऑप्शन बी ना कौन फीडबैक प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड टीचर एटा हमरा कोउथरे हुए ना दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट जोथरे कि से फीडबैक टीचर एवं स्टूडेंट को बोथ को देई थाए ओके नेक्स्ट आसिले कौन द मेन फंक्शन ऑफ टीएलएम as used in the classroom is attracting learners attention improving classroom discipline improving teachers competence enriching learning experience of learners कौन होगा सोलह नंबर बी क्लासरूम डिसिप्लिन तो हब नहीं टीचर्स कॉम्पिटेंस तो हब नहीं ए हब ना डी हब वेरी गुड ऑप्शन डी एनरिचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स नेक्स्ट चलो Now, which of the following approaches provides for better learning condition? Teacher centric, learner centric, subject centric, library centric. अभिनव 4.0 रे तुम्हारा कंटेंट पेडागोजी हेई नाही कंटेंट पेडागोजी स्टार्ट हेई जिवो काली किंबा पर ऑनवर्ड्स तो डोंट वरी हे गले तुम मानन को शो करबो एंड मो क्लासेस रे भी ग्रुप रे भी तुम मानन को इन्फॉर्म कर देबी को टाइमिंग कोन सब किछि आराम से क्लास करि परबो वेरी गुड लर्नर सेंट्रिक नेक्स्ट आसी गला कोन ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज कंडक्टेड बाय द टीचर एट द एंड ऑफ द लेसन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन कौन हबो डायग्नोस्टिक बी ड्यूरिंग 19 नंबर सी ओके
डायग्नोस्टिक टा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हबो ना एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन हबो? अच्छा जो माने ड्यूरिंग कहूछ ओके, जो माने एट द बिगिनिंग कहूछ ओके, ताहले को एटा तो हबनी, एंड हबनी, डीटा हबनी, बी आ सी रे तुम्हारा कंफ्यूजन रहउछ। जो माने बी रहउछ बी को एक्सप्लेन करो, जो माने सी कहूछ सी को एक्सप्लेन करो। सी अधा पिला कहउछ ना एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन जदी तुम्हारा एठी किछि नथांता पिला माने ड्यूरिंग रे फॉर्मेटिव, यस। डायग्नोस्टिक डज नॉट मीन कि तमे जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट करूछ, यस ऑप्शन ए जदी तुम्हारा ड्यूरिंग नथांदा ताहाले बिगिनिंग हेई थांदा। सी तुम्हारा एठी केमिति हबो, जोठी ड्यूरिंग आ बिगिनिंग थिबो सेठी तुमको ड्यूरिंग ही करबा को पड़िबो, काहे कि बुझो सेटा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आमे जो कहूचे फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग रु आमे करूचे, क्लास स्टार्टिंग रु आमे करूचे, तो सेटा आमे कहि दोचे बोले समस्तंगर सेटा हैबिचुएटेड हेई जाउची। बट डायग्नोसिस डज नॉट मीन्स केवल आमे एंट्री टाइम रे करू। एंट्री बिहेवियर जदी छुआ मनकर जानिबा पई आमे करू एंट्री बिहेवियर, तो एंट्री बिहेवियर हमर प्लेसमेंट असेसमेंट आसे जिवो। तो मैंने जानी टू नो अबाउट एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आमे को असेसमेंट रा यूज करि थाउ ना एंट्री बिहेवियर पई आमे प्लेसमेंट असेसमेंट रा यूज करि थाउ। ओके हां, तो राइट आंसर कोन ना ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एटा हबो। तापरे आसिला कोन ना द इंटरेक्शन एमंग फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, संस्कृतिजाइजेशन, मैच्योरेशन, मोटिवेशन कोन? द इंटरेक्शन एमंग फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट। से ओडिया इंग्लिश हिंदी लिखि देकी देलेनी। ओके वेरी गुड। तो राइट आंसर कौन तुमरा मैच्योरेशन, मोटिवेशन हबो नहीं। नेक्स्ट तुमरा एठी सॉरी गला ही, नेक्स्ट आउ कौन जेबे आ खाली बैच रो ये गुडा थिबो। तो तुमे माने जदी पिला माने केही भी एबे एसएसबी टीजीटी पई प्रिपेयर हबा पई चाहूच, ताले मोर जदी प्रिपेयर होबा को चाहूच आडा 247 ओडिया रे एसएसबी टीजीटी बैच अछि। जदी तमरो किछि क्वेरी अछि ए नंबर रे कॉल करि पारिबो, तमो कोन अवेलेबल अछि, बैच केते टंका, केमिति एनरोल करिवो जानि पारिबो। ता सहित कौन ना तुमर जो मानकर अभिनव पाई तमे प्रिपेयर हवा को चाहूच, ताले अभिनव 5.0 स्टार्ट हे गलेडी। तमने मध्य कॉल करिकि तमे यूज करि परिबो कोड YT46 एंड बैच रे एनरोल करिकि निजर प्रिपरेशन आरंभ करि परिबो। एंड जो माने चाहूच कि पेडागोजी बुक रू प्रिपरेशन करबे पई चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रू प्रिपरेशन करि परिबो, बुक ने कि YT46 कोड यूज करि परिबो एवं बुक को परचेस करि परिबो, नहले आमे YT रे क्लास करूछे एवं करबा। ओके यस निहाती भाबरे एसएसबी टीजीटी आ छाड़ीबा नाही। आमे छाड़ी देले कोन गोटे जिंस पोस्ट केबे आसीबो आमे क्लास करबानी, हमर इंटरेस्ट आसुनी, एई सब जिंस है कि कोन ही जाउची ना हम माइंड टिके 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 कोन हो जे इथरो गुंजी जाउची। त निहाती भाबरे आमे रेगुलर सेशंस आनिबा, प्रैक्टिस करबा, सो दैट हमर जेमते प्रैक्टिस ता हम सहित रही।